Evening Prime is brought to you by Misho, Amrutanjan Fruitnik Electro Plus, Dehydrate Feel Alive, TVS Jupiter 125, Zada Se Bhi Zada, Flipkart, India ka fashion capital, Oil India Limited, Everyday Spices, Leah Agarbatti, TVS Apache RTR, and Himalaya Purifying Neem Face Wash, Pimple Free, Healthy Skin ka expert. Politics heats up in Sikkim over soaring incident. SDF accuses SKM of carrying out orchestrated attack on party functionaries. SDF alleges police of giving free hand to SKM workers during violence. Meghalaya Games 2022 kicks off in Shillong. Chief Minister Conrad Sangma assures a proper accommodation for athletes, says time not for indulging in blame game. Rampant influx of Rohingyas in northeast exposed once again. 24 Rohingyas arrested at Kailashahar in Tripura. Another Rohingya arrested in Assam's Dima Hasao district. President Ramnath Kovind arrives in Assam on 3-day visit. Governor Jagdish Mukhi, Chief Minister Himanta Biswa Sharma welcomed President Kovind in Guwahati. And Prime Minister Narendra Modi reaches Denmark as part of historic maiden visit. Prime Minister Modi holds talks with Danish counterpart Mette Frederiksen. Climate change check on Prime Minister Modi's agenda for talks. And violence mars Eid-ul-Fitr and Akshaya Tritiya celebrations in Rajasthan. Chief Minister Ashok Gehlot appeals for peace and calm. Stone pelting also reported outside mosque in Jammu and Kashmir. Khargon in Madhya Pradesh still under curfew. Hello and welcome to Evening Prime. I'm Ronak and we start the bulletin with the top focus this evening. The Sikkim Democratic Front today alleged that the 30th April soaring violence was a well-orchestrated attack on SDF party leaders and functionaries by the ruling SKM party. Briefing news persons, SDF leader J.B. Darnal alleged that these SKM party workers were given a free hand by police personnel who were present at the spot during the incident. The SDF leader also alleged the police of putting injured SDF leader Arun Limbo behind bars instead of providing medical assistance to him and demanded the judiciary to intervene into the matter. And if that was not all, SDF leader J.B. Darnal also claimed that two party spokespersons, namely Rig Singh Norbu Bhutia and Avinash Yakha, have gone missing since the day of the violence. Darnal also sought proper probe by the police into the incident. इंसिडेंट तो ये नहीं, इंसिडेंट तो रोज होता है। ये सालों से हम लोग झेल कर आ रहे हैं। जब एसडीएम पार्टी सरकार में पहुंचाए तब तो एसडीएफ पार्टी के ऊपर ये रोज जुल्म ढा रहे हैं। हम तो अभी तो मतलब ये लगने लगा है कि कब किसको कहाँ मारेगा ये कोई पता नहीं चलता। आज सिक्किम ये आदमी नहीं, सिक्किम का आज स्टेट बीमार हो, राज्य बीमार हो गया, एक बीमारू राज्य हो गया है। कानून व्यवस्था का कोई बात नहीं है। ये यहाँ जंगल राज चल रहा है, माफिया राज चल रहा है, गुंडे राज चल रहे हैं। ये गुंडे राज करते हैं, माफिया लोग राज करते हैं। तो यहाँ पे एसडीएफ वाले जितने भी कार्यकर्ता है, एसडीएफ के नेता क्या 25 साल तक मुख्यमंत्री किया हुआ चामलिंग साहब के ऊपर भी ये लोग मतलब आधा दर्जन से ज्यादा बार ये लोग हमला किए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि चामलिंग साहब के ऊपर इतने हमले हुए हैं, एसडीएफ पार्टी के ऊपर इतने हमले हुए हैं। जितने बार भी हम लोग मतलब एफआईआर करते हैं थाना में, तो अभी तो ये थाना में जाना भी दूभर कर दिया। जब ये लोग घटना करते हैं, आक्रमण करते हैं, तब एसटीएम वाले वो थाना में इकट्ठा होकर पूरा डंडा भाला बरसा सब कुछ लेके तब थाना में इकट्ठा होकर ये लोग तो एफआईआर करने भी नहीं देता है। उसके एवज में दूसरे बार वो लोग एफआईआर करते हैं। उन्हीं लोगों के एफआईआर के ऊपर एसकेएम सरकार अथवा इस एसकेएम सरकार की जो पुलिस है, ये पुलिस एसडीएफ वाले को धर पकड़ करके जेल में डाल रहे हैं, थाना में डाल रहे हैं। तो
तो यहाँ पर तो कोई कानून नाम की चीज है ही नहीं कि डीएजी रेंज ये बोले कि ये घटना कोई सुनियोजित घटना नहीं था, ये घटना अचानक हुआ है बोलते हैं। तो डीएजी रेंज को कैसे पता चला कि वो तो गैंगटॉक में थे, घटना तो सोरेंग में हुआ था, ये दूसरे तीसरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ, बाहर के डिस्ट्रिक्ट में वो घटना हुआ था। डीएजी रेंज को कैसे पता चला कि ये घटना कोई सुनियोजित घटना नहीं था, तो ये अचानक हुआ है। तो हम लोग कहते हैं कि ये सोरेंग की घटना पहली बार थोड़ी है, सुनियोजित घटना नहीं। जितने बार भी एसकेएम वाले ने, सरकार रूलिंग पार्टी वाले ने एसडीएफ वाले के ऊपर आक्रमण किए हैं, अटैक किए हैं, ये सब सुनियोजित, ये घात लगा कर बैठते हैं, पूरा ढूंगा ये जो पत्थर उथर सब लेके बैठते हैं, स्टोन पेल्टिंग करते हैं, पत्थर लेके बैठते हैं, और जहां से हमारा पार्टी अध्यक्ष का ये मूवमेंट होता है वहीं पर ये लोग आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं। All right, on to the big story from Meghalaya now. Chief Minister Conrad Sangma today officially opened the 4th edition of the Meghalaya Games. The games were inaugurated by the Meghalaya Chief Minister during the opening ceremony, which was held at Shillong Sports Association 1st Division Ground at Polo. A total number of 2,600 athletes will be competing in 19 disciplines in the mega sporting event, which is being held as part of the 50th Statehood Day celebrations. The games will conclude on the 7th of the month at the SAI Center in Nehu. The SAI Center at Nehu will host 7 disciplines, namely archery, athletics, men's football, gymnastics, weightlifting, karate, and table tennis. Negrims will host the basketball events. The Molai Moro Indoor Hall will feature boxing, while Molai Madan Hay will be the site for the women's football up to the semi-finals, with the title match to be held at the SAI. The golf event will, meanwhile, be held at the iconic Shillong Golf Course. Cycling, both across the country as well as downhill races, will take place at Mulki, while Shillong Club will host tennis as well as billiards and snooker. The Laban SC Indoor Stadium will feature 2 martial art forms, namely Judo and Taekwondo, while Wushu will be held at the Madan Tring Indoor Hall. Shooting will be held at the Assam Regimental Center, and swimming will go on at the Krinolin Swimming Pool. Talking to the media after the inauguration ceremony, Chief Minister Conrad Sangma said that while they are happy that the games have begun, they accept that everything is not perfect. Here, while talking about the controversy surrounding the accommodation of some athletes, the Meghalaya Chief Minister stated that this is not the time for a blame game, rather to learn from the experience and make sure such mistakes are not repeated. Well, it's always a learning experience. This game is happening after many years. It's the 4th time in the last 50 years it's happened. So yes, everything was not perfect. But yes, we could have minimized the entire, difficulties that they faced. But I guess that's the process of how things happen. And I'm sure that MSOA as well as the department will learn from this. So I don't think it's time for a blame game. I think it's important that we move forward. The main event is the games. And I think we have taken steps to rectify the problems that were there. It happens, and action has been taken, and I'm thankful to the MSOA and others, and even the sports persons who are here. I'm thankful to them for their patience. And now let the games begin, let the games start. So I could not speak to everybody, but obviously I've been getting pictures and messages from the athletes, because I happen to be in touch with quite a number of them, and they've thanked me for the steps taken. I told them it's not me, it's the MSOA. But of course, it can be improved even further. So we will continue to improve, and I hope that we all will learn from this. Most importantly, the organizing committee will learn from this, and will ensure that in the future, as this game becomes an annual event, we'll ensure that it becomes better and better in the coming years. And talking specifically about the controversy over the accommodation for some athletes, Chief Minister Conrad Sangma said that the toilets in the middle of the controversy were not meant to be used and were locked, and someone opened them up and took pictures. He, however, also stated that instead of indulging in a blame game, they are concentrating on rectifying the mistakes and making sure that the games are a big success. Actually, I don't want to talk about it now because it's not appropriate for me to say all this. It looks as if we're making excuses. But you're right that those toilets actually were not meant to be used. They were toilets that were locked because of the fact that they were unusable. But somehow somebody opened it up and click pictures, which is again unfortunate. But again, as I said, I'm not here to make play games or blame. We're here to play real games, not
play games like these to blame each other. I think it's important we move forward now, and enough has been said about this and talked about this. What is important is the games, but we will continue to ensure that wherever there are small shortcomings or big shortcomings, we'll ensure that we take steps to rectify them. And also talking on the controversy surrounding the accommodation for athletes was co-chairman of the Meghalaya Games Organizing Committee, John F. Karshing, who took responsibility for the entire episode and tendered an apology for these shortcomings. He, however, also stated that they have all learned their lesson from the experience and would make sure that such an episode never happens again. I take full responsibility and I apologize for this shortcoming in our competition, which we did expect the unexpected arrival of the large number of athletes. So yes, we can do better. We will do better next time. We learned through this mistake, and I repeat all the athletes, all the associations, all the district associations to take it in a sporting spirit. The MSA intention was to ensure that the games continue. Right. However, that is no excuse for us. We must make it better. Right. So what we will do is we will review this after this games are over. We'll have a review meeting and we will find out where all are the shortcomings, and we assure everyone that we will improve this situation. You see, there was a training hall which was used also in the 2020. So the difference was in 2020, third Meghalaya Games, we held it in February. So there were no rains. So this time we are holding it in the first week of May. This also teaches us incessant rains for the last 2-3 days caused all the seepage, leakage on that particular indoor hall. And that's how, obviously, if there's some seepage and leakage, then athletes will be unhappy. We have provided bio toilets, we have provided additional toilets, temporary toilets, and hence, like I said, we accept all these shortcomings. I take full responsibility as the working president of the MSA. As of now, there are about 2,600 athletes, 19 associations, and equal number of male and female participants, besides the volunteers, besides the technical officials. So it's a huge. I think it's the biggest contingent event in the state ever been held. And shifting focus now, President Ramnath Kovind arrived in Guwahati today on a 3-day visit to Assam. President Kovind was welcomed at the LGBI airport in Guwahati by Governor Jagdish Mukhi, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma, Chief Secretary Jishnu Barua, DGP Bhaskar Jyoti Mahanto, besides other dignitaries. President Kovind will be attending the concluding day of the Boro Sahitya Sabha in Tamulpur tomorrow. Yes, viewers, a big development coming in at this point in time as President Ramnath Kovind arrived in Guwahati on a 3-day visit to Assam today. President Kovind was welcomed at the LGBI airport in Guwahati by Governor Jagdish Mukhi, Chief Minister Himanta Biswa Sharma, Chief Secretary Jishnu Barua, DGP Bhaskar Jyoti Mahanto, besides other dignitaries. President Kovind will be attending the concluding day of the Boro Sahitya Sabha in Tamulpur tomorrow. And on that note, it's time for a very short break here, viewers, but don't go anywhere. Lots more coming up on the other side. Stay tuned. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Acha? Introducing the new Suzuki Avensis, the sportiest, zippiest ride in town that's loaded with next generation GPS navigation. Simi kota se? Jodi moi koluheten ami matisu, tente wait karlaheten nahoy. The new Suzuki Avensis, Mosaic for trip. Borun! Hi, Ma.
ঘৰত বাৰু কাজিয়া কৰি আহিছ নেকি? বোৱাৰী নাহিল যে? এতিয়া মই গোটেই মাহটো ইয়াতেই থাকিম। কি? অৱশ্যে ক্ৰিকেটো এমাহ ধৰিয়েই চলাৰ কথা। নতুন টিভি লগালা? ডিছ HD নাই লগোৱা? কি দেউতা? আৰে কিয় কৰি আহিলা? জান ফুলটো সকলোৱে কৰ্মচাৰীক আমি অতিৰিক্তভাৱে টকা দিব লগা আছিল। এইখিনি আমি অতিৰিক্তভাৱে টকা আমি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে পাবৰ কাৰণে আজি কেবিনেটে 308 কোটি ৭৫ লাখ টকা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। এতিয়া প্ৰত্যেকজন কৰ্মচাৰীয়ে তৎকালীনভাৱে এই টকাটো পাব। তেখেতসকলক 100টা চাকৰি দিয়া কথা আছিল। গতিকে চাকৰিৰ তালিকা আহিছে, 100তকৈ অধিক আহিছে। গতিকে তাৰ সুইটেবল কেণ্ডিডেটৰ মানে যিসকলে আমি কৰিব পাৰিব বুলি ভাবিম, এইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হৈ আছে আৰু এসপ্তাহৰ ভিতৰত আমি চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকক এই কমিটমেণ্ট যি আছিল গভৰ্ণমেণ্টৰ এই চাকৰিখিনি তেওঁলোকক দিবৰ কাৰণে। And on the other hand, a total of rupees 2,000 crore has been cleared by the state government for establishing medical colleges in Bongaigaon, Dhemaji, Morigaon and Golaghat. The government has allocated rupees 500 crore for the construction of each medical college. 4খন মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণৰ বাবে বঙাইগাঁও, ধেমাজি, গোলাঘাট, মৰিগাঁও এই 4খন মেডিকেল কলেজৰ কাৰণে 500 কোটিকৈ এখনত 2000 কোটি টকা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰুভেল প্ৰশাসনিক অনুমোদন দিয়া হৈছে। It's time for another short break now. More news and updates to follow on the other side. Stay tuned. बड़े छोटे साथ आओ ऐश करो नाच गाओ मस्ती में आओ यहाँ बार बार खेलो झूमो कूदो यहाँ मस्ती में আনন্দৰ উৎসৱ বিহু আহিছে ঘৰে ঘৰে আহাৰৰ সোৱাদ জাগিছে এভৰিডে স্পাইচেছ উইশেছ ইউ এ হেপী বিহু বৰুণ হাই মা। ঘৰত বাৰু কাজিয়া কৰি আহিছ নেকি? বোৱাৰী নাহিল যে? এতিয়া মই গোটেই মাহটো ইয়াতেই থাকিম। কি? অৱশ্যে ক্ৰিকেটো এমাহ ধৰিয়েই চলাৰ কথা। নতুন টিভি লগালা? ডিছ HD নাই লগোৱা? কি দেউতা? আৰে কিয় কৰি আহিলা? জান ফুলটো সকলোৱে নকৰে জানো। ক্ৰিকেটৰ আচল পাৰ্টনাৰ হ'ল কেৱল ডিছ HD, অনুপম পিকচাৰ, অনুপম চাউণ্ড। নৰ্মেল দামতেই পোৱা HD মাত্ৰ 233 টকা এমাহত। ডিছ নহয়, ডিছ গাঁও এইটো। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ। कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाया। All the best. We, the people of the Northeast, can also contest it. उस नाम के अंदर बहुत कुछ है। पूर्वोत्तर में क्या रही आज की सुर्खियां? चुनावी राज्यों की राजनीतिक हलचल। देश विदेश की वो खबरें जिससे है अपनों का खास नाता। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार। जानने के लिए देखिए समाचार नॉर्थ ईस्ट हर शाम 6 बजे। Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage.
Welcome back, viewers. You're watching Evening Prime. Before we continue, let's have another look at the headlines. Politics heats up in Sikkim over soaring incident. SDF accuses SKM of carrying out orchestrated attack on party functionaries. SDF alleges police of giving free hand to SKM workers during violence. Meghalaya Games 2022 kicks off in Shillong. Chief Minister Conrad Sangma assures proper accommodation for athletes, says time not for indulging in blame game. Rampant influx of Rohingyas in Northeast exposed once again. 24 Rohingyas arrested at Kailashahar in Tripura, another arrested in Assam's Dima Hasao district. President Ramnath Kovind arrives in Assam on 3-day visit. Governor Jagdish Mukhi, Chief Minister Himanta Biswa Sharma welcome President Kovind in Guwahati. Prime Minister Narendra Modi reaches Denmark as part of historic maiden visit. Prime Minister holds talks with Danish counterpart Mette Frederiksen. Climate change check on Prime Minister Modi's agenda for talks. And violence mars Eid ul-Fitr and Akshaya Tritiya celebrations in Rajasthan. Chief Minister Ashok Gehlot appeals for peace and calm. Stone pelting also reported outside mosque in Jammu and Kashmir. Khargon in Madhya Pradesh still under curfew. Welcome back, viewers, and on to some other news now. Giving a major developmental push for the people of Tezu Sunpura constituency in Lohit district of Arunachal Pradesh. Deputy Chief Minister Chauna Main today inaugurated a slew of development projects in Tezu town. The 4 projects inaugurated by the Deputy Chief Minister are Extension Building of Circuit House, Divisional Forest Officer Building, Executive Engineer, Urban Development and Housing Office Building, and Administrative Building of IG Government College. MLA Karikho Cree was also present on the occasion, along with a host of officials from the Lohit District Administration, as well as public leaders. Later, addressing a gathering at the Amik Ringya Hall, Chauna Main came up with a detailed narrative of the developmental initiative being undertaken by the Pema Khandu-led Arunachal Pradesh government for the last few years. He stated that the government had decided to accord topmost priority to the health and education sector, as well as development of infrastructure in the bordering areas. In his speech, local MLA Karikho Cree, while praising the state government for its developmental efforts in Tezu, also requested the government to sanction projects to deal with the massive problem of floods and erosion in Tezu by the Lohit River and Tezu Nala. Cultural troops in their traditional attires presented several cultural performances on the occasion. Lohit is our parent district, and for the development of Lohit districts, each and every one of the elected members of these surrounding districts are responsible for the development. We have come across in these years one of the best communication, the districts which is well connected through air, through the train, and through the road. And today's the inauguration. This is the symbol of the development. These are our assets. I have inaugurated in the morning. That is the annexee of the Tezu Circuit House and the DFO's office and the administrative block of the colleges, the Indira Gandhi Government College, and that UD, that Urban Development Office building. During the celebration of 50 years of Arunachal Pradesh, we have decided that the villages, those who are very near to the international border, across the international border, those villages, as a pilot project, 3 villages we have adopted to construct model village. At the same time, हमने 17 जो गांव है इंटरनेशनल बॉर्डर में 17 गांव को भी हमने 50 करोड़ खर्चा करके उसमें स्टैंड अलोन जो माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसको लेगा। सबसे पहले हम डीसीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। उन्होंने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया और उन्होंने तेजू में
4 आज उद्घाटन किया, जिसमें से सर्किट हाउस का एक्सटेंशन है और इसमें से डेफो ऑफिस है, एजुकेटिव इंजीनियर यूडी का है और आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक मैंने आईजीजी कॉलेज किया। मैंने उनका पास में बेखुलियांग का रास्ता के लिए, फ्लड कंट्रोल का और अपना ये रिलेटिव पेंडेशन गवर्नमेंट क्वार्टर्स है और दूसरा है अपना ये क्या बोलता है ये पानी टैंकी पूरा रस्टिंग है और आईजीजी कॉलेज में साइंस स्ट्रीम का बिल्डिंग इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। इन सभी को मैंने समय में कर देने के लिए उनका सामने रखा और सर ने फुल एश्योरेंस दिया। सरकार तेजू सोनप्रा का साथ में है, डीसीएम सर जो कोष अध्यक्ष भी है, जो ये फाइनेंस मिनिस्टर भी है, उन्होंने बहुत खुशी से बोला है कि हमको खुशी लगा है, ये काम करेंगे, ऐसे बताया। ये लास्ट टाइम मैंने ड्यूरिंग बजट सेशन में असेंबली में क्वेश्चन उठाया। तेजू सबसे ओल्डेस्ट टाउन है जिसको फ्लड प्रोन एरिया है, सॉइल इरोजन बहुत आ रहा है। आपने आज देखा होगा गांव जी एकदम लाइव टेलीकास्ट जैसे बता रहा था, डीसीएम साहब से अपील कर रहा था। लोहित और ये क्या नाम है इनका जो तेजू नाला, दोनों ही माने तेजू टाउन के लिए खतरा है। तो मैं डीसीएम साहब का जो फाइनेंस मिनिस्टर भी है उनका समक्ष रखा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉजिटिव होगा। Shifting focus now, the Assam BJP has named Mrigen Saranya as the new mayor for the Guwahati Municipal Corporation. The name of the new mayor was declared at a crucial meeting held in the state BJP headquarters in the presence of Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma, state BJP President Bhavesh Kolita, and other leaders of the party. আজি আমাৰ দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ সভাপতিত্বত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পাৰিষদসকলৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সকলোৰে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ হিচাপে শ্ৰী মৃগেন শৰণীয়া আৰু ডেপুটি মেয়ৰ হিচাপে স্মিতা ৰয়ক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে নিৰ্বাচিত কৰিছে। মই দুইগৰাকীকে মোৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু গুৱাহাটীবাসীৰ আশা আকাংক্ষা যাতে তেওঁলোকে পূৰ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেখেতসকলক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। It may be mentioned here that the results of the recently held GMC elections were out on the 24th of April, wherein BJP-AGP alliance won 58 out of the total 60 GMC wards. And meanwhile, we have reactions from the newly elected Mayor Mrigen Saranya and Deputy Mayor Smita Roy. Listen in. নিশ্চয়কৈ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ যিখিনি সমস্যা আছে আৰু বিগত আমি 6 বছৰৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি আমাৰ চৰকাৰ আছে যিখিনি আমি কৰি আছোঁ আৰু বহুখিনি আমাৰ কৰিব লগা আছে, সেইখিনি আমি কৰিবলৈ আমি আগভাগ ল'ম আৰু স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমে পদক্ষেপ ল'ম। যেনেকৈ যোৱাবাৰো মই বিভিন্ন ধৰণৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, সেই চেষ্টা মোৰ অব্যাহত থাকিব আৰু কৃত্ৰিম বানপানী ইতিমধ্যে আমি বহুখিনি আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ সমাধান। তো আগন্তুক দিনত আৰু কিমান কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব আৰু খোৱা পানীৰ সমস্যাটো গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে যেটা আমি ঘৰে ঘৰে যেটা কেম্পেইনৰ কাৰণে কৈছিল সেইটো কৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেনেকৈ কৈছে যে আমি অহা মে' জুনৰ পৰা প্ৰপত্ৰ দিব, ঠিক তেনেদৰে সেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে এইখিনি সমস্যা যিখিনি মৌলিক সমস্যা আছে সেইখিনি সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আমি যথোপৰিমাণে কষ্ট কৰিম। ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো আমাৰ সংকল্প পত্ৰ আছিল তাতে ইতিমধ্যে সকলোখিনি কথা কৈছে যে অহা মে' মাহৰ পৰা আমি প্ৰপত্ৰ আমি দিম, কানেকশ্যন আমি কৰি দিম আৰু তাৰ পিছতে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত যিখিনি পানী যোগান আছে সেইখিনি যোগান আমি দিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু অহা আমি 23 চনৰ আগে পিছে আমি গোটেইখিনি আমি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। ষ্ট্ৰীট লাইটৰ সমস্যাটো হৈ আছে, বিভিন্ন জেগাত আমাৰ এতিয়া নতুনকৈ ষ্ট্ৰীট লাইট দিছোঁ আৰু আমি আৰু 10,000 ষ্ট্ৰীট লাইট দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। সেইখিনি আমি কৰাৰ পিছতে পৰ্যায় और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें। ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। जो मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने और कुछ नेताओं को मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी नेता हो, कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए तमाम पार्टी के लोग एकजुट रहेंगे। ये मैं उनसे अपील करना चाहूँगा।
Meanwhile, the Union Minister Mukhtar Abbas Naqvi, BJP spokesperson Shehzad Poonawala has attacked the Ashok Gehlot-led Rajasthan government for the violence in Jodhpur. Listening. राजस्थान में शांति और अमन बनाए रखने की अपील करते हुए सवाल ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्या ये केवल संयोग है या ये सोचा समझा प्रयोग है कि नववर्ष की यात्रा के समय करौली में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो जाती है और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के गृह जिले जोधपुर में जिस प्रकार से जालोरी गेट में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव फैला और उसको फैलाने दिया गया, इसके पीछे का कारण केवल इंटेलिजेंस फेलियर है या तुष्टीकरण की राजनीति में लीन हुई सरकार का संपूर्ण फेलियर है। ये बार बार ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आती है। सवाल ये भी पैदा होता है कि अब जो सांप्रदायिक तनाव और माहौल बिगड़ा है जोधपुर में, उसका ठीकरा अशोक गहलोत क्या फिर से केंद्र पर फोड़ने की कोशिश करेंगे या इसकी जिम्मेदारी वो उठाएंगे? ऐसी घटनाएं कब तक चलती रहेगी राजस्थान में, इसका जवाब भी अशोक गहलोत की सरकार को और कांग्रेस पार्टी को देना होगा। एक सन की साजिश है। इस सन की साजिश के जरिए हमारे देश के सौहार्द को, हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के संस्कार को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है, वो कोशिश लगातार कुछ लोग कुछ इस तरह की साजिशी ताकतें करती रहती हैं। हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। जो भी गुनाहगार इस तरह की घटनाओं को कर रहा हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी तरह से, किसी भी रूप में देश के सौहार्द के, देश के भाईचारे के और देश के समावेशी विकास के रास्ते में कोई भी बाधा, कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं आना चाहिए। राजस्थान की सरकार, मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है, वो बहुत पूरे देश को ज्ञान देते फिरते हैं, एकता का ज्ञान देते फिरते हैं, सेकुलरिज्म का ज्ञान देते फिरते हैं, मोदी जी को ज्ञान देते फिरते हैं, लेकिन खुद जो है वो आज पूरी तरह से अपने ही चतुराई और अपने ही साजिशों के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं और वो पूरी तरह से जिस तरह का वहाँ पर क्राइम हो रहा है, कम्युनलिज्म हो रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। And meanwhile, there is also an incident of stone pelting reported outside a mosque in South Kashmir's Anantnag district after early morning Eid prayers. As per information, a few miscreants raised slogans demanding a free Kashmir during Eid prayers. Just when security forces stepped in, the miscreants started hurling stones at them. Security forces have, however, informed that the situation has now been brought under control and security has been beefed up in the area. And meanwhile, the curfew in Madhya Pradesh's Khargon has not been relaxed today as India celebrates Akshaya Tritiya and Eid. The district saw clashes last month when processions were carried out on Ram Navami. The district administration has decided not to relax the curfew and has asked people to celebrate Eid ul Fitr and Akshaya Tritiya at home. Violence took place during Ram Navami procession in Khargon on the 10th of April, after which curfew was imposed in the city. Security has been tightened in Khargon and all religious places in the city will remain closed today. Around 1,300 police personnel have been deployed and strict monitoring is being conducted through drones and CCTV cameras, according to reports. And along with this, temporary jails have also been set up for those who violate the curfew. Restrictions were imposed in Khargon, which is about 300 kilometers from the state capital of Bhopal in Madhya Pradesh, after violent clashes broke out on the 10th of April as a Ram Navami procession made its way past a mosque. According to the police, vehicles and shops and at least a dozen houses were burnt down. And with this, several people, including police personnel, were also left injured. Over 120 people have been arrested in connection with the case so far. And with that, we've come to the end of our news bulletin. Stay tuned to Northeast Live for more news and updates. Thank you for watching.
বৰুণ হাই মা ঘৰত বাৰু কাজিয়া কৰি আহিছ নেকি বোৱাৰী নাহিল যে এতিয়া মই গোটেই মাহটো ইয়াতেই থাকিম কি অৱশ্যে